Hi Janice, I'm so excited. I'm so happy. जानते हैं क्यों? Because I'm soon to become a billionaire. Hi, I tell you Janice, I had my eyes set on Asif's billions, Nawaz darling's billions, and now of course Parvez bhai's billions. But इन तीनों में से किसी ने मुझे कुछ नहीं दिया. अब आप सोचते होंगे कि मुझे मेरे बिलियंस कहाँ से मिलने वाले हैं? FBI डार्लिंग, FBI. हाय, और अब सोचें कि वो कैसे. दरअसल I have found out who the real mastermind was behind the WTC attacks. You know, the World Trade Center. हाँ जानीस, उसके पीछे उसामा का हाथ नहीं था. अब आप पूछेंगे कि किसका हाथ था? Janice, I was as shocked as you would be once I tell you who the real culprit was. Well, how can I tell you? Well, I don't know. I'll tell FBI that I was the one who told you. It was PIA, Janice. It was PIA. Oh, अब आप कहेंगे कि मुझे ये कैसे पता चला? Well, Janice, हुआ ये कि आप तो जानते हैं सब कि how much interested in history I am. So I was going through the history of PIA.com. And there I came across the blueprints of the WTC attacks. Ah, and here they are. और जानीस, जैसा कि आपने देखा, ये प्लान मार्च ऑफ 1979 में ही बन चुका था. हाय, वैसे I tell you, no wonder the Europeans have decided to ban PIA flights. एक तो पहले ही ड्राई फ्लाइट्स, ऊपर से अब टेररिस्ट माइंडसेट भी. हाँ, वैसे I wonder why all PIA flights should be dry. I mean, PIA even begins with a P, just like Pakistan, I tell you. And I have a very special guest here this evening. मेरे आज के पहले मेहमान एक बहुत बड़े आदमी हैं. उनका नाम भी बड़ा, उनका मकाम भी बड़ा, उनका घर भी बड़ा और उनका रुतबा भी बहुत बड़ा. And Janice, you all know, being so larger than life myself, I've always been attracted to things that are large. Large things, large people, and of course, Janice, large bank accounts. I'm not going to make him wait for too long. So step right in. Ardeshir Cowasjee. आइएगा. And how are you, Cowasjee? So wonderful. बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते. कब से आपकी राह देख रही थी. अच्छा, ये पहले तो मुझे ये बताइए कि what should I call you? Can I call you Ardeshir Cowasjee साहब या AC? What would you be most comfortable with? Ardeshir. Ardeshir. क्या हाल है? कैसे हैं? बिल्कुल ठीक. It's really wonderful to have you. Thank you. Here. You know, माशाल्लाह. And मैं नहीं जानती कि मैं कहाँ से शुरू करूँ. Because जब आपकी ज़िंदगी की तरफ देखा जाता है, there's so many achievements, so much that you've really done. आदेशर, आप जब अपनी ज़िंदगी की तरफ देखते हैं, आप शुरू करो 47 से आगे 1926 तक शुरू करो. I know, and what fabulous thought. अच्छा, 1926 और अब माशाल्लाह 2006. It's been a long journey. Oh yes. और इतनी सारी तब्दीलियाँ, इतना सारा कुछ आपकी इन आँखों ने ज़रूर देखा होगा. आपको क्या लगता है आदेशर, क्या हम सही सिमत में बढ़ रहे हैं? No, we are going down, 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 according to plan. According to plan? Oh yes. And whose plan would that be? Well, any logical man's. Any? Any logical thinking man's. No, but you said that we are going down, down. हमारा तो ये feeling है. जी. It's a feeling. कि पाकिस्तान जो बचा है हो जाएगा. है, शुभ शुभ बोलिए, शुभ शुभ बोलिए. शुभ शुभ क्या? मैंने कहा आप तो मुझे डरा रहे हैं. क्या पाकिस्तान होने वाला है? हमारी जिंदगी में नहीं होएगा. आई एम सेफ. हमारी जिंदगी में नहीं होएगा. मैं तो चले, हमारे गुजर जाने के बाद होगा. नहीं हमारे से नहीं तुम्हारे में होएगा शायद. तुम तो बीवी बहुत जुबान हो. थैंक यू सो मच. लेकिन मैं जानती हूँ कि आप भी काफ़ी जवान हैं अभी. अच्छा,
अभी बाजोड़ से किस्सा शुरू करते हैं. दैट्स द हॉट बर्निंग इशू. बाजोड़, मैंने तो उनको बहुत समझाया कि बाजोड़ को ना तोड़, बाजोड़ को ना तोड़, लेकिन इन्होंने भी इतने जोर से तोड़ा, इतने जोर से तोड़ा. टेल मी द रिपरकशंस ऑफ बाजोड़ रैली, ऑफ दिस वन इंसिडेंट दैट यू फील. ये कौन सोचता है? तोड़ने के आगे सोचना चाहिए ना. अभी तो तोड़ दिया. कितना बच्चा माँ बाप बगैर का हो गया, कितना माँ बाप का बच्चा मर गया. दर्द किसको होता है? बट यू आर हर्ड, यू हैव अ वॉइस. आपका राब्ता है परवेज भाई से ऑन एनी इशू? अरे बाबा, हैव अ वॉइस. वॉइस तो है मगर सुनने वाला नहीं है ना. सुनने वाले बहुत हैं. आदेश, अरे बीबी नाटक करके क्या करता है यार. नहीं, बट हैव यू स्पोकन टू? एक बात सुनो ना, 170 मिलियन लोग हैं हमारे में. जट कितने इसमें से? जट कितने हैं? हाँ. हाय, बहुत सारे जट. हाँ तो पीछे जट ही जट है. Here people don't talk to each other, they talk at each other. और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होएगा तो छुरी कितना निकालता है. मैं कह रही थी कि जिस तरह जब पाकिस्तान बना in 1947, you were 21 years old. Yes. Hey Jani, I wish I was around at that time. I would have loved to see you at 21. But आपने अपनी आंखों से बनते देखा. You were youth. You must have been all excited, all happy, looking forward to this independent state being Yes. created. पहले तो मुझे ये I बताएं. remember standing on the road waiting for Jinnah to pass by in his carriage. पीछे एक दफ़ा ऊँट गाड़ी में भी गया था. उधर यूसुफ हारून उसका सेनापति था. He was his bodyguard. Really? Yes. अच्छा. But did you ever get to meet Mr. Jinnah? Yes, yes. And how did you find him as a person, really? Perfect gentleman, enlightened. खाने पीने वाला आदमी था. विस्की पीता था. बात करता था. Actually, one day he invited my father late in the evening. And my father says, अभी शाम को 7 बजे क्यों बुलाता है, क्या बात है? When he went there, he says, Rustam, what will you have? बोलता है lemonade sir. तुम कौन सी किस्म का पारसी है? I'm looking for somebody to drink with. और तुम बोलता है lemonade. तुम्हारा बाप ने ना बोला? हमारा बाप पीता है, हमारा माँ पीता है, हमारे बच्चे लोग पीता है, हमारी बीवी पीता है. हमको पसंद नहीं है. But चलें अब. And he was a great dictator, a benign dictator. A dictator? बिल्कुल. ये कुछ बोले, सवाल ही नहीं था कि कोई साला सामने बोले. But आज भी अगर हम देखें आदेशर, तो हमारे मुल्क का एक अलमिया, what I call a big tragedy, unfortunately, is the fact कि हमारे यहाँ it's always individuals, and every person who is in power thinks that he only is right, and everybody else does not really, or other people's opinion does not really matter. अभी देखो नहीं, बात सीधी करो ना. Can Musharraf get a better job than this? Is he not having fun? तो तुम क्या उसको बोलते कि तुम घर चले जाओ? He'll hang on. He's got a one-point agenda, and rightly so. 50 साल निकाल देवे. Are you talking about Parvez Bhai now? Who is Parvez Bhai? I call him Musharraf, General Okay, Musharraf. General Musharraf. I don't call him Parvez Bhai. I know, you're General Musharraf. And what is that one-point agenda? One-point agenda, stay in power as long as possible. That, of course, Pakistan first. He's living for Pakistan. ये तो अभी कास्ट्रो देखो ना, 50 साल निकाल लिया. और चरिया गद्दाफी ने 30 साल निकाल लिया. अब तो नॉर्थ कोरिया का चैंपियन है, पता नहीं वो कितना साल निकालेगा. उससे तो डर लगता है, नहीं लगता है तुम्हें? वो तो बॉम्ब फेंकने वाला है साला. बॉम्ब फेंकने वाले? ओहो. हाय, कहाँ पर? क्या? यहाँ तो नहीं फेंकेगा ना बॉम्ब? अल्लाह के फजल से हम दूर है. टोक्यो तो बहुत तकलीफ में है. I know. I'm so scared of rockets, darling. I'm really scared of अभी rockets. स्केट करके क्या करता है? And मुझे मर्दों की फैसिनेशन समझ नहीं आती कि क्या शौक होता है काफिज जी? क्या शौक? किसको शौक होता है खाने का? हाँ? डालने वाला है, डालने वाला इरादा करता है, मार देता है, उसको सारा पूछ के मारता है. ये तो बम फेंक सकता है कोरिया वाला. Coming back to Mr. Jinnah, 1947 Pakistan was created. 1948 Jinnah passed away. Mr. Jinnah passed away. बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर जिन्ना साहब ने when he knew that he was going to that he was
ill, extremely ill, that he should have sort of formulated a certain a constitution, people who will be running the show after him, a system in place. लेकिन वो सिस्टम ना तब बन सका और आज तक हमें नजर आता है कि there's no system in place. Really. एक बात सुनो, जिना बड़ा किसके साथ हुआ, वो बाहर करके आया, लिखे पढ़ के आया, पीछे बॉम्बे चले गया, इधर रहा ही नहीं है. बॉम्बे में नहीं रहा, कराची में नहीं रहा, लाहौर में नहीं रहा, पेशावर में नहीं रहा, क्वेटा में नहीं रहा. These places were foreign to him. He was used to Bombay friends, Delhi friends, Calcutta friends. इसकी दोस्त एक किस्म के थे. He thought पूरा जंगली लोग भी वही है. अच्छा, what I have always found very fascinating when I compare Gandhi and Jinnah. अभी आपने बड़े मज़े की बात की and you said that all his friends were in Bombay and Calcutta and Delhi. कि उनके कराची में और क्वेटा में और लाहौर में friends नहीं थे. The difference now when I see between Gandhi and Jinnah really is that Gandhi wore the traditional dhoti and the chadar, and he went around speaking Hindi, giving shiksha as such, educating his people, the common people, telling them, creating that awareness really. Jinnah spoke his perfect Angrezi with his cigar, with his English mannerism, really. How do you compare the two leaders? How do you compare Gandhi and Jinnah? बहुत उम्दा था. Both great people. Both people with confidence. So why could the two great people with the confidence not agree on just getting rid of the Gora and agree on one big India? अभी लोग गोरे का फॉल्ट निकालता है. माउंटबेटन को बोलते हैं कि जल्दी चले गया. पार्टीशन हुआ, उसके बाद आदमी मरा है, उसके आगे इतना आदमी नहीं मरा. वो ज़माने में ये सब मिल के बोलता था गोरे को, अभी नहीं जाओ, नेक्स्ट ईयर जाओ. कोई बोल सकता था? वो तो बोलता था गो, कल ज़्यादा तो साला आज जाओ. आज तो अब सब साले बोलता है, सब चैंपियन हो गया कि गोरे लोग छोड़ के चले गए. उसका क्या कसूर? As far as Goras are concerned, they were the best colonial masters. डच खराब था, बेल्जियन खराब था, फ्रेंच खराब था. As colonialists they were good. ये सब लिखा पढ़ा के गया. जितना हम लोग लिखा पढ़ा है, गोरे की बदौलत गोरे ने लिखा पढ़ा के गया. उसकी सिस्टम भी, गवर्नमेंट भी सिस्टम बहुत अच्छी थी. इंडिया ने अभी तक रखा है असिस्टेंट कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर एंड कमिश्नर. हमारा एक आदमी आता है, वो साला कोई बेसिक डेमोक्रेट बनाता है. अभी जनरल नकवी ने साला ग्रास रूट डेमोक्रेसी को बनाया. चढ़िए लोग को नाजिम निज़ाम साला बोलता है. सब साले पैसे बनाते. आपने कभी नाजिम से बात किया? नहीं. वो दो लफ्ज़ बोलते हैं, हम कहने वाला है, आप कौन बोलने वाला. Really? इधर कुछ नहीं. खराब लोग है. I know. अच्छा, coming to the first martial law, General Field Marshal अयूब खान. अगर हम अयूब खान से शुरू करें तो we see three rulers really in uniform. We see Ayub Khan, we see Ziaul Haq, and now we see General Pervez Musharraf. And of course, Agha Jani, I did not count General Yahya Khan in... क्यों नहीं? रंगीला राजा था, उसको क्यों नहीं गिनता? चले, उसको भी गिन लेती है. मैंने कहा उनके लिए मेरे दिल में कुछ खास जगह है. दरअसल खास क्या जगह है? He has a very important place in my heart. Who? General Yahya. जनरल यादव बिल्कुल अच्छा आदमी था. हाँ, अच्छा आदमी था. बहुत आया करते थे मेरे पास. अच्छा, let's compare the martial law regimes जो 4 dictators रहे as such. Let's start with Ayub Khan. आप उनसे मिले अयूब खान से? हाँ, मिला है. उससे तो बात भी हुई, उसका गुस्सा भी लिया है. उससे तो बात हुआ था. अच्छा. And how did you find him? वो समझने वाले थे, सुनने वाले थे? इसके पास एक गधा मिनिस्टर था भुट्टो, उसको पागल बनाया. हाय, you can't call my ZAP a गधा.
I can't call what? My ZAB. I can't call him a गद्दा. चलो गोरा बोलो. खुशी हो अभी लड़के क्या कर गए इसमें? आजकल आपके लिए खाने कौन पकाता है? Who's cooking for you these days? एक बंगाली है. हाँ. बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा आदमी है. मगर he's a bad cook. He's a bad cook ना? I'm a very good cook. और वो अच्छा है तो मैं अच्छी हूँ. बहुत अच्छी. और अक्लमंद है. जब ये कुछ ठीक नहीं बनाता है, सीखता है, सीखने को तैयार है. जब हम उसको बोला था कि बाबा ये खाओ, तो बोलता हमारे पे क्यों जुल्म करता है. खराब है जब ये हमको क्यों खिलाता है. अभी तो हम बोलता साला तुम हमको खिलाता है तो तुम खा के देखो. Okay, he's a very good man. He likes my dogs. Looks after my dogs, cat, cockatoo. There all the time. I can look after your dogs too. How? तो बुलाओ. आओ. अच्छा आओ. हमें कोई अर्जा नहीं है. I'll come and I'll cook something really nice for you. चलो आओ. And is that African grey of yours still around? African के मर गया बेचारा. Oh, sad. और ये भी कोई 90 साल का होता. अच्छा, coming back to Zulfikar Ali Bhutto, my ZAB. My ZAB आप कभी मिला था इसको? मिला था आप? हाँ? आप इसको मिला था कभी? Of course, Johnny. But our meetings used to be behind closed doors. Anyway, coming back to the fact that you were detained for a period of 72 days without any reason, without any charges, without anything really. What was that detention all about? क्या आपको धमकाया जा रहा था? Were you being blackmailed? What was the story behind that? बाबा, हमने कोशिश किया जेल से बाहर आया उसके बाद मिलने को. नहीं मिला. He was a coward. So you never met him after that until he died? He never met me. तो मैं क्या करूँ? मैं जब भी इसको ये था इरादा था कि आपको जेल से छोड़ना. जब भी हमारा बाप को मिलने हाँ वाला तो हमारा बाप और हमारा बीवी गया पिंडी. उसका ऑफिस में गया तो बोलता है कि बेबी को नहीं ले अंदर. बिकॉज ही वॉज श्योर कि शी वुड से कि यू सो एंड सो सन ऑफ अ सो एंड सो सी कुक और व्हाटएवर. व्हाई डिड यू जेल हिम? बिकॉज वो लोग दोनों ही स्कूल में था साथ. कैथीड्रल स्कूल बॉम्बे में हमारा बीवी भी और भुट्टो भी. तो उसको भी नहीं मिला. उसको बोला उसको नहीं लेके आओ, बाप को लेके आओ. And he kept on saying, you don't know what your son has done. बोलता है कि वो नहीं जानता है, हम नहीं जानता है. बोलो तो सही क्या किया. In the right time आया ही नहीं. But you know, it's so. अभी हमारे वाले सब सारे सीक्रेट लेके जाता है. अभी मतलब गुलाम इशाक भी सब सीक्रेट लेके गया, उसके साथ मर गया जब भी. तो भुट्टो भी लेके गया. इतने तो कितने सीक्रेट हो गए. No, but what I find so interesting how you said just now that he was a coward, and how the people of this country. I am of the firm belief. अभी तुम भी थोड़ा बड़ा होगा तो सीख जाएगा कि bully is always a coward, always. And a coward is always a bully. अच्छा, बेनज़ीर के बारे में बताएं. बेनज़ीर भुट्टो की बेटी carries this legacy, the big Bhutto name. That gets her votes really. Had you seen her with her original nose? No. पीछे हम तो उस ज़माने में देखा था. वापस ओरिजिनल नोज लगाओ. वो तो साची बहुत अक्लमंद था. They were the impresarios. And they gave her a good nose, good cheekbones. मेहनत किया. Made her a good looking woman. और कितना चांस, ऐसा चांस तो कौन चांस देता है. एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा. बट मैं आपको बिल्कुल हकीकत बताऊं, मेरा जो हुस्न है ना, my beauty sweetie, I didn't have any surgeons work on my face. All of this came very naturally to me. But anyway, so you know, and I don't really care how she became beautiful, and I'm not interested in her looks even. All I'm interested really is in her politics. क्या politics? आज इतना सिक्योर है कि she wants to be the leader for life. If she's a good leader, does she want an assurance? आज सब उसका चढ़िया लोग है, डरता है उसके सामने बात करने को. मगर उसका भी क्या गुनाह. देखो ना, गुलाम इशाक जैसा आदमी, he swore her husband in as a minister.
गुलाम इशाक जैसा आदमी, ही सेंट फॉर जाम सादिक अली नवेरी में द चीफ मिनिस्टर, ही डिडंट नो हु जाम सादिक अली वाज। एक कुर्सी के लिए तो लोग क्या क्या करता है। द बेस्ट थिंग इज नॉट टू वांट। ये चरिया नवाज शरीफ नहीं मुझे कहा तुम गवर्नर बनो सिंध का, मैं बोला नहीं बनूंगा, क्यों बनूंगा, उसका गवर्नर बनना अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है, उसकी गुलामी साले का क्यों करेगा। ये ऐसा तो आदमी जाता है 2 पैसे का आदमी है सब साले। Is there any hope though? अभी नहीं हम बोलते तुम लोग वही सवाल करते रहते हैं, हमारे हिसाब से नहीं है। Changing the topic. अभी it was Change so करो। funny. It was so funny. अभी 3 ईदें हुई, you know, and I thought कि शायद हमारा मुल्क वाहिद मुल्क है जहाँ 3 ईदें मनाई जाती हैं, बट कभी क्रिसमस नहीं हुआ कि 24 दिसंबर को या 26 दिसंबर को मनाई जाए, ऑलवेज 25 दिसंबर। मैंने सुना कि अयूब खान साहब के ज़माने में भी इस किस्म का एक वाक़या हुआ था जब 3 ईदें मनाई गई थी। प्लीज़ यू हैव टू टेल मी हाउ डिड ही हैंडल दैट। ये हमारा कॉलम में हमने लिखा था, लास्ट कॉलम में। हाय प्लीज़ आई लाइक इसने सब जनरल को बोल दिया कि देखो ये सी द मुल्ला सी द चांद द डे आई डिक्लेयर। उसने हिसाब करके बोला ये तारीख को चांद देखना चाहिए। क्वेटे वाला मुल्ला को नहीं दिखा, क्वेटे वाला जनरल ने टेलीफोन किया कि हमारा मुल्ला को चांद नहीं दिखता है। ही सेड सी दैट ही सीज द मून। तो लिखे गया कि भाई मुल्ला साहब चांद देखता है, बोलता नहीं देखता है। उसको फिर आया ये वेस्ट कैंप देखता है, देखा, वापस फिर आया चांद देखा, मुल्ला बोलता है देखा। अच्छा, परवेज़ भाई कहते हैं कि आई एम सॉरी जनरल मुशर्रफ, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, ये आप उसको भाई बोलता है, वो आपको बहन बोलता है क्या? नहीं, मुझे भाभी बोलते हैं वो कभी वो कभी। बोलता है, चलो शाबाश। अच्छा, मैं कह रही थी कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने फरमाया है कि बेनज़ीर भुट्टो को और नवाज शरीफ को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दैट? यस। कि तुम कितना चांस समझता है, कितना दफ़ा बोले एक आदमी को चांस जस्ट ऑन दैट बेसिस, क्या ठेका लिया है क्या? उस पे बॉटम पे छाप मारा है क्या कि प्राइम मिनिस्टर वापस बनेगा? छाप समझता है? हाँ जी। हाँ, हाँ, बहुत अच्छी तरह। पीछे दूसरा आदमी नहीं है, दूसरा औरत नहीं है कोई, मैं हूँ ना। आपको बना। लेट्स कैंपेन फॉर मी टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर। हम किसी के लिए कैंपेन नहीं करते, हम हमारा जान क्यों खराब करेगा? I mean, we'll move into the prime minister house together. जी We'll move in it together. नहीं वो नहीं चला सकता ये। कोई भी 170 मिलियन गद्दे लोगों को लाइन पे चलाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और दिन 1 मिनट का 10 आदमी का जन्म होता है, 10 आदमी नहीं 10 बर्थ होता है 1 मिनट का, 1 घंटे का 600। I know. अच्छा, मैं हमेशा कहती हूँ कि पाकिस्तानीज are not a productive nation but a very reproductive nation. We keep increasing all the time. और पीछे बीमारी कितनी, मर जावे तो भी इतनी स्कूल कहाँ से लावे? नहीं सिखा नहीं सकता आदमी को तो क्या। I hope you're using your mosque bill and I hope you're looking after yourself. I hope you're saving yourself from the mosquitoes these days, huh? I'm so scared with this whole dengue fever that's been going around, really. तो बात सुनो, मैं बिब्लिकल एज में मानता हूँ 70 70 हो गया, पीछे इट्स ग्रेस, समझ गया? और बाईपास भी हो गया है, स्टेंट भी लगाया है, ये अपना पेसर भी पहना है, समझ गया? I love you so much, and you know I'm having such a lovely conversation with you. आपसे एक मशवरा चाहिए छोटा सा. You know, I mean this house is old now. इसको भी गिराना है. I want to move into a new locality, build a new house. I want to buy a piece of land. But I'm so scared of, because you know I have no man doing the work for me, and as a single woman it's so difficult. My friends keep telling me कि there's you know land mafias जो हैं वो बहुत active हैं और मुझे इसके अंदर involve नहीं होना चाहिए, मेरा पैसा डूब ना जाए. इतनी land mafias, इतनी land grabbing, कराची
शहर में एक बहुत बड़ा इशू है जिस पे आपने बहुत काम भी किया है. Has it made any difference? Have things changed? कुछ नहीं, वापस MQM में आके बैठ गया है. देखो ना, बीवी जो राज करने को इधर आता है वो चोरी करता है, बदमाशी करता है, घर बनाता है, जमीन लेता है. आज का टर्न है. जिधर देखो तो जनरल की कॉलोनी है, जिधर देखो तो कॉर्नर हाउस. बीबी वाला आएगा तो उसकी दिवाली, नवाज वाला आएगा तो उसकी दिवाली. इधर इंसाफ की बात ही नहीं है. I know. इस मुल्क का डिफेंस भी फेजेस में है, which is so. क्या डिफेंस. आज 6 प्लेन ज़्यादा लेगा कि 25 प्लेन भी ज़्यादा लेगा F-16 तो हम बच जाएगा. F-16 F-16. आज हमारा PI का फ्लीट को सबको आधा फ्लीट को बंद कर दिया है. एंड थैंक गॉड के गिरे उसके आगे बंद किया है. आप पोकल सुना है? पोकल का क्या मतलब? पोकल है डिटरेंट. ये मुल्क को नंगा भूखा को कौन लेवे? आप जो हिंदुस्तान का जो ये है, हिंदुस्तान हमारे से 10 गुना बड़ा है. वो तो फिजिकल फैक्ट है. आदमी भी 10 गुना है. अच्छा, तो हम बोलते हैं वो इक्वल है. तो हिंदुस्तान बोलता है इक्वल है. तुम जो मांगता है बोलो. आज तुम मुझे कहेगा कि आई एम मोर पावरफुल देन यू आर, तो बोले भाई यू आर मोर पावरफुल. हमारा जान खराब करके क्या करता है? इधर जो मांगता है वो साला स्टेटमेंट मारता है. हिंदुस्तान से दोस्ती करनी चाहिए. अफगानिस्तान से हमारा दोस्त कौन है? ईरान नहीं है. हिंदुस्तान नहीं दोस्त, ईरान नहीं दोस्त, चीना नहीं दोस्त. लड़ाई होगा तो हमारे साथ एक मुल्क साथ नहीं आएगा. खांसी करेगा, आवाज़ करेगा. बट अमेरिका आएगा ना. ईस्ट पाकिस्तान गया, कितना आदमी रोआ वो बताओ ना. नहीं, but Bush and Mush are such allies. They are best friends. Wouldn't Bush come to Mush के रेस्क्यू के लिए नहीं आएंगे वो? एयरक्राफ्ट के भेजेगा. अच्छा, खैर, अब आप भी मुझसे खफा होंगे, नाराज होंगे. हम नाराज भी नहीं है, खफा भी नहीं है. आप तो मजाक करने को आया तुम्हारे साथ आज. I know, and you know, और मैंने कहा अभी महफिल कुछ अधूरी सी आपको लग रही होगी, और मैं जानती हूँ कि आप you are somebody who's fond of pleasant company. I have somebody, a friend of mine, over, and I'd like to invite her in. She's very, very talented. She's very, very creative, and she's just a lovely, lovely person. A lovely, lovely girl, really. I'm sure you would really like her when you meet her. Step right in, Nadyamistry. Hello, darling. How are you? I'm going to the way too high. Welcome, Nadya. Welcome, मेरी जान, to my drawing room. Thank you. How have you been? I've been great. What about you? बिल्कुल ठीक ठाक. Really, you know, I've always wanted to ask you one thing. Really, are you more of a mystery or are you more of a mystery? I'm a bit of both. I've always found it to be a mysterious mystery. No, but where does the talent come from? I think my parents are both talented. My father is an engineer by profession. My mother is very artistic. She's a hairdresser, beautician. So I guess it comes from them. And she's such a smooth operator. You know what she did? Before coming here, she called up my butler and asked my butler what color is Begum Sahaba wearing today. Of course. Of course. And she had to wear a brighter shade of what I was wearing. Lovely, whatever that is. It looks like a ghagra skirt. It is. And very Rajasthani print, is it? It is. Hi, you've got to make me one of those. Absolutely, I'd love to. So how's your designing coming along? Great, fabulous, mashallah. Any shows? I just did one in India. I was there early August, bride and groom show. Looking forward to another show, hopefully in January. Let's see. अच्छा, अभी इसी मौजू पे हमारी बात हो रही थी पाकिस्तान के हवाले से and इंडिया के हवाले से. You being a designer, when you take your stuff to India, what kind of response do you get from people there?
Well, I think it's very well received. Grass is always greener on the other side. I think people always fancy stuff from India here, and likewise over there, because although we have the same culture sort of, and same mindset, but there is still a difference in workmanship. You can see that. I also feel that quality-wise, our work is much superior than you find in India. It's finer in India. It's much superior here. It's superior Yeah. here. हाय देखा आपने हमारे यहाँ अच्छा काम होता है. वो कहती है कि हमारे यहाँ जो कारीगर हैं जो काम करते हैं things like embroidery and that kind of work is better in Pakistan. चलो खुशी हो. Even fabric is much better. जो यहाँ पे hand woven fabric बनता है, the quality is much better. Much better. By the way, I must introduce my two guests. Ardeshir, that's Nadya Mistry. She is one of the leading fashion designers in our country, and she's just a social butterfly. Hopping her way from one party to another, from Like one group you, of friends. just like Of course, you, just like following me, you. sweetie, of course, following my footsteps. But you can never be like me, sweetie, because there's only one me, and there can Absolutely, never be I another agree. me. Huh? I agree. Do I come across as boastful? Do I come across as boastful and full of myself? You are a woman. Tell me about the women in your life. Tell me about the women in your life. Why should I? Huh? Why not? Sitting in my drawing room, we can share personal stuff. I'll tell you about the men in my life then. I've already been telling you about all the men in my life. That's your privilege. And how did you meet? How did you meet my wife? Yeah, how did you meet your wife? We met. नहीं शादी के आगे मिला था. And then we were in college together here. Actually, you guys were in college together? ना एक साल हमारा नीचे था. Ah. Actually, she was yes, एक साल नीचे था. Then she became a doctor. She became a doctor? Yes. Oh, how wonderful. And then you became her patient, huh? I became the patient. But was it like love at first sight, or We the families knew each other. अच्छा. Family को नहीं पसंद था. होता है. तो फिर आपने family के साथ टक्कर ली और you fought with the family and you said no, this is. दोनों के माँ बाप अक्ल वाला था, बोलता है ठहर जाओ एक साल. मुझे एक साल ठहर गया. अच्छा, how you've been in and out of relationships? Yes. And how are guys? How do they behave in relationships these days? Weird. I don't think they take relationships very seriously. To them, normally the guys, strangely, would not. Normally, they don't date the women they would marry. They just date for the sake of dating. Just because they need a partner to go to parties or to show off or whatever. I feel that's mostly the school of thought that they're coming from. And it's really strange. Acha suno, do you design clothes for men also? I do. You do? And do you design clothes for grooms also? Absolutely. Who's And getting do you married? And you do bridals also? I do. You never know. He might just change his mind and then we might just have to move together into the Prime Minister house together. Really? As the first couple. Come on, designers right here. At least we can place an order for our clothes. Yeah, I could be an that's excuse progressive, for a that's marriage. forward thinking, progressive thinking. Or wishful thinking. Or wishful thinking. So what did you wear on your shadi? What did I wear? What did you wear on your shadi? On my shadi? On your shadi, what did you wear? A sherwani or a Suit. suit? No, Parsi coat. Parsi Yeah. Long Parsi coat. It's like a sherwani. Very like a sherwani. Do you still have it saved somewhere? Pardon? Do you still have it in your नहीं, possession? खत्म हो गया. सिल्क का था, अभी इतना साल किधर रहेगा? Even he's wearing blue. Even he's wearing blue. Wow. We're all coordinated. We're all coordinated. There's so much blue around us. Wow. Do you have a political opinion also? I don't know. I'd like to. I'd like to be in politics at some point, I guess. She also wants to be in politics. If she wants to waste her time. Oh my God. No, इन्होंने तो साफ-साफ कह दिया, इन्होंने कहा कि there is no hope. Really? हाँ, और ये कहते हैं कि पाकिस्तान अभी नहीं तो शायद हमारे गुजर जाने के बाद डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ये मुल्क नहीं बचेगा. और ये चीज़ जब इन्होंने कही तो ये मेरे दिल को जाके लगी ये बात, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली मुझे भी कभी कभी ऐसा ही लगता है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो.
और मैं समझती हूँ you being a part of the youth brigade really, of people on the forefront really, of people who are passionate about stuff and who are doing things and you know excelling in their chosen professions really. How do you feel, Nadya? Well, I am very patriotic, but you know, to an extent, you know, sometimes even I feel, you know, very hopeless, and I feel very unmotivated, and I want to just leave. Maybe I think I'm even going through that phase right now. जब मैं सारी hopes give up कर दिए. But there's something about this place. I think it just grows on you, and it just makes you believe in it, you know, and you want to do something for Pakistan. But you know, I don't know about the people of Pakistan. I know about the land. I'm, you know, very much attached to Pakistan as, you know, the country that it is. But the people sometimes, I think, disappoint you. So now we know that you're going to be growing up to be a land grabber too. She's got her eyes set on the land, sweetie. She's got big a time, big time. I want to own all the property here. Tell me about Pervez Musharraf. What do you want to know? I don't know him at all. What do you like? I mean, as a president of this country, how do you feel about him? I think he's charming. I don't know. That's a good thing to say. I don't like his sense of dressing though. Okay, and? And I don't know. I don't take him very seriously. I don't take anyone very seriously. So, like most politicians, so it doesn't really matter to me. Is that disappointing? आप देखो ना, चौधरी तुम्हें पसंद है? नहीं. अच्छा. उनको मैं बहुत पसंद हूँ लेकिन. अल्ताफ पसंद है? नहीं. इधर का अरबाब पसंद है? आए हाय, प्लीज माफ रखिए. अच्छा. आप कैसे कैसे नाम ले रहे मेरे सामने? इधर की गवर्नर पसंद है तुमको? अल्लाह माफ कर. ये तो पता. पीछे मुल्ला पसंद है? नहीं. मुल्ला मेरे पीछे पड़े हुए, क्या करूं? तो अब इधर क्या है, ये मुशर्रफ को सूट होता है, पागल लोग को सबको साथ किया है, कल दूसरी दोस्ती करेगा. लेकिन मुझे आप पसंद है, मुझे ये पसंद है, मुझे अपना आप पसंद है. हम लोग मिलकर क्यों नहीं कुछ कर सकते? Why can't we? बात आप क्या, हम बोलते हैं कि हम जाके क्या तलवार निकाल के पाकिस्तान ले लेगा, हमारे कोई शौक नहीं है. 170 मिलियन आदमी को संभालना कोई मशगरी का काम है? साला पानी नहीं, बिजली नहीं, खाना नहीं, गटर नहीं, रास्ता नहीं. लेकिन शौकत तो कहते हैं, शौकत अजीज तो कहते हैं कि 150 मिलियन लोग हैं. शौकत अजीज को झूठा बोलने की जरूर है, हमें झूठा बोलने की जरूर नहीं है. नहीं, but he's a nice man, शौकत अजीज. तो मैंने कहा बड़ा खराब है? अच्छा आदमी है, वापस अमेरिका जाके बैठ जाएगा. You're a Karachiite. You're a Karachiite also. You've lived all your life in Karachi. Completely, yeah. I'm a Karachiite. I love my Karachi. But you know, अब आजकल जो कराची का हालात का हाल हुआ हुआ है, you know, with the bijli, no bijli, with the sadaks, all tutti-putti roads, you know, with the Khandar passes that they've made, with all the water problems, with all this and that. कराची के साथ इतनी ज़्यादती क्यों हो रही है? कराची में बिल्कुल कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, सब किस्म के आदमी है, अफगान भी है, सिंधी भी है, अपना शिया भी है, सुन्नी भी है, किस्म किस्म के आदमी है. आदेश, there's a problem. You know, 2007 elections आने वाले हैं और सब पार्टीज मेरे पीछे पड़ गई हैं. सब क्या? पार्टीज मेरे पीछे पड़ गई. All these people are after me. All these political parties are after me. They want me to join. MQM wants me to join. Altaf wants me to join. MQM, Benazir wants me to join. People's Party, Fulana Nawaz keeps calling. He says, join my party. They say, join my party. Pervez Bhai says, join my party. You know, Chaudhary क्या क्या? Chaudhary, तो I don't deal with Chaudhary. I was saying कि, but I don't want to join any party, sweetie. I just want to party. I just want to party. Do you like to party? Do I like to go to parties? Yeah. What sort of parties? Dance parties, fun parties, cocktail parties, all kinds of parties. The right sweetie. kind of parties. The right kind of parties, हाँ. हाँ? हाँ, मजा करना बहुत शौक है. शौक है? हमें कोई ये नहीं कि बड़ा सेक्रीफाइस किया, ये किया, हमें वो कोई शौक नहीं है नाटक करने का. जिना कभी बोलता था कि बहुत सेक्रीफाइस किया. जिना बोलता हमने सेक्रीफाइस नहीं किया, खाया पिया, मजा किया, सिल्क का सूट पहना. आपकी फेवरेट पोजेशन क्या है? What is your favorite possession? What is that one thing that you have means the most to you? हमें तो सब चीज़, बहुत चीज़ पसंद है. अभी एक फेवरेट कुछ नहीं है.
पता है मुझे लग रहा है कि हम दोनों ना अल्लाह मियां ने हमें बनाया एक दूसरे के लिए था. अच्छा, soulmates. हाँ, इनको म्यूजिक हर किस्म का पसंद, मुझे म्यूजिक हर किस्म का पसंद. इनको खाना हर किस्म का पसंद, मुझे खाना हर किस्म का पसंद. इनको हर चीज पसंद, मुझको हर चीज पसंद. लेकिन इनको आप नहीं पसंद है, I think. नहीं. He's not making his moves. क्या ये सच कह रही है? क्या मैं आपको नहीं पसंद? तुम्हें दुखी करने का मुझे शौक नहीं. Oh my God! There you go. That was a big ouch. चलो, okay, then make me happy, please. कुछ मुझे खुशी कर देना, कुछ झूठी बोल के मुझे खुश कर दे. खुशी करेगा, चलो. मेरे हुस्न की तारीफ करते, मेरी साड़ी की तारीफ करते. तुम्हारी तारीफ किया, तुम्हारे ज्वेलरी का किया, तुम्हारा साड़ी का किया, सब कुछ किया. आदाब, बहुत शुक्रिया. Really, you've been so kind. किसी से लड़ाई तो नहीं तुम्हारी आजकल? नहीं. इंडस्ट्री के अंदर सबसे दोस्ती है? As designers, I have no problems with anyone. But with people's intentions, I do have a problem. Like I said about the Fashion Council. Why do people become greedy, Nadya? Exactly, I wonder why. But you come from a good family, actually. But and you've really not had to struggle as such. I mean, how much does it help to come from an affluent background with money when you come into a field like? But Mistry is not Aga Khani name, is it? It's both Aga Khanis and Parsis. Even Parsis have that surname. Aga Khani Mistry, I haven't come across it. Bombay, there are a lot in Bombay. आपका family Bombay से है? जी, my father's from Bombay. हाँ. My mother's a Karachiite. My mother's mother was also born in Karachi. हाँ. Hey, there are peace-loving people. It's a good community. Again, educated. I think Aga Khani में 90% educated हो गया. हमारा तो अच्छा है 100%. नहीं, ये तो बहुत अच्छा है सारा. मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छी तरह समझ में भी आ रहा है. मैं इतनी भोली नहीं हूँ अभी. हाँ. और मैंने कहा अच्छा है, बॉम्बे और कराची के कनेक्शन मिलते रहने चाहिए. मैं तो I'm all for open borders, open trade. Are you getting jealous now? No, darling. Because he's talking to me more and he likes me more. I will fight. Let's have a cat fight. Wait till I cook my Sindhi biryani for him. Then he's going to like me better. Why? Because I cook such amazing Sindhi biryani. I learned the recipe from Pinky, वो सिंधियों की बिरयानी बनाती है, मैं सिंधी बिरयानी बनाती हूँ. Good one. But it's been such a pleasure having you here in my drawing room, having you. अभी Dawn release हुई है, शाहरुख खान की फिल्म. Do you watch Indian movies? नहीं देखते आप? किसकी? Dawn. It's a Shahrukh Khan film that's just been released in India. It's called Dawn. It's the remake of an old Dawn. Do you remember Dawn where Amitabh Bachchan had played Dawn many years ago? नहीं, मुझे नहीं पता. Achha, anyway, it's a new film. I was just thinking, I was wondering maybe the three of us could get together again and watch a movie. I'm willing to see it. Chalo. That'd be fun. Let's get Sounds like a lot together. of fun. You like Indian films? I do, some of them, yeah. है ना? You like Shah Rukh Khan? Sure. हाँ. अच्छा, सिर्फ जाते-जाते मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ. What do you foresee happening in the 2007 elections and afterwards? Musharraf is competent enough. He should win. Is that fact that you're stating, or is that? I think he can manage it. He can manage his winning or running the country. He is winning. I think little of it if he can't manage it. It will be properly managed. Observers आएगा वो पास करेगा. Election Commission आएगा वो पास करेगा. ये तो हो सकता है. ये कोई तकलीफ की बात नहीं है. I'd like him to win. You'd like him to win? Yes, and you mean it? And you mean it from the... Yes. Okay. I've said it in print that he's the best of the dicey lot. इसका मतलब समझ गए? हमको 5 सामने देखता है, उसमें से ये पसंद करता हूँ. तुम बोलो ना, तुम्हें को पसंद है? नहीं, मुझे तो परवेज भाई बहुत पसंद. Me too. हाँ. My vote's for him. चलो, great. So all of us are voting for you, परवेज भाई. आप 2007 इलेक्शन की तैयारी करें, जीतने की तैयारी करें. We are all with you. Wish you all the best of luck. Don't forget to invite us to your presidency once you win. Maybe that's when we should watch Dawn. We could watch Dawn with you. ये आदमी खराब नहीं है, मुशर्रफ. I mean, my reading of the man is he's a good guy. He likes all the good things of life. He likes to enjoy life. नाटक नहीं करता है. He's balanced, I think. Yes.
इन द लाइन ऑफ फायर आपने पढ़ी, क्या लिखनी चाहिए थी उनको एज सिटिंग इन ऑफिस? अभी लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, लिखी, किसने भी लिखी, पब्लिश किया. It was launched by the most powerful man in the world. Best seller भी हो गया. Complete sold out also. Complete Everywhere, everywhere. Really? Yeah, you see it everywhere. I mean. That's true. Even on traffic lights, Yeah. red light होती है ना, तो वहाँ पे वो किताब लेके फिर रहे होते हैं लोग. I know. I know. Very But you good. know, as they say, all is well that ends well. Yes, yes. It's Or that makes a lot of money. Or that makes a lot of money. Mashallah, you making your money, and you have to send me an outfit, nice one. I'd love to. जाते जाते आखिरी बस बात. And so what is your worth, sweetie? What is? What is your worth? How many millions? Are we? Priceless. He's priceless. Okay, he's priceless, of course, of course. How many millions do you have? I don't know. You don't know? I'm counting. Oh, I huh? love it. I'll count them all for you. I could help. Of course you could help, sweetie. You have to be with me all the time. शादी का जोड़ा तुमने बनाना है ना? हाँ, sure. What should I wear on my wedding? White or red? Black. देखो ना, एक बात सुनो. How many millions? This was a story told to me by my father. आगे का ज़माना में, अंग्रेज़ का ज़माना में, there was only an Indian merchants chamber. पाकिस्तान तो नहीं था. बॉम्बे में उसका हेडक्वार्टर्स. एनुअल मीटिंग के लिए सब लोग जाता था. हमारा दादा भी जाता था, हमारा बाप भी जाता था साथ. तो एज दे हमारे बाप दादा वॉज ऊंचा आदमी था, तो उसके लिए फ्रंट रो में सीट रखता था. तो एज दे पास थ्रू द आयल, somebody would whisper कि कराची का फ़कीर जी, कावस जी, 9 करोड़ की पार्टी, एज दे कॉल देम. दूसरा आगे चले तो बोलते ये 15 करोड़ की पार्टी. आगे चले 25 करोड़ की पार्टी. तो हमारा बाप पूछता, हमने हमारा बाप को बोला कि हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है. इतना करोड़, वो ये ज़माने में करोड़ रुपया तो बहुत चीज़ था. तो 25 करोड़ 10 करोड़. हमारे दादा ने बोला कि मैं बोलता हूँ हमारी बैंक क्रेडिट बढ़ती. Wonderful, really. अभी उस क्रेडिट को बढ़ाने और घटाने का कारोबार धंधा मैं करूँगी. लेकिन it was wonderful having you. क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है. It was really wonderful having you in my drawing room. And Nadyamistry, wonderful having you in my drawing room. You know, I'd been talking about you from the first show that I ever did. Really? And yes, and you've been a part of this drawing room in spirit. I'm flattered. And I'm so glad that you could finally make it today, tonight. मुझे उम्मीद है कि आज कावस जी से मिलके, आदेशर कावस जी से मिलके, नादिया मिस्त्री से मिलके आपको खुशी हुई होगी और मेरी साड़ी आपको पसंद आई होगी. आप लोग अपना बहुत हर ख्याल दफ़ा दूसरी साड़ी पहनता हो आप? हाँ, Oh, of very course. nice, very Chania never repeat my sarees. Next time I you're have wearing so mine. many sarees, so many sarees. You know, I was thinking I should hold a grand auction. Next time you're wearing mine. Next time I'm wearing her sari. लेकिन कावस जी आपको पसंद आई ना मेरी ये साड़ी? तो यही करना है अब. ये तो बुश ने सिखाया हमको कि लाल टाई पहनना और ब्लू सूट पहनना टीवी पे. कुछ. But you know, I'm loving the combination. I'm trying to make this combination permanent, sweetheart. If you know what I mean. सब पूरा काला पहनना. हाँ नहीं, I'm talking about this combination. Yeah. तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह अगले हफ्ते मैं फिर हाजिर होंगी with 2 very exciting personalities. Until then, take care. खुदा हाफिज. नवाजिश.